Hi friends, this is the first video of chapter 6, secondary activities of our book Fundamentals of Human Geography, class 12th. So this is the first video, so we are going to start with the definition. Secondary activities, we all know, they are those activities which are related to manufacturing. है ना, कुछ create करना, कुछ manufacture करना is all secondary activities. So we'll start with a complete definition. Secondary activities are those activities that add value to natural resources by converting raw material into finished goods or valuable products by the processes of manufacturing, processing, construction, etc. This will be the complete definition for secondary activities. Otherwise, you all are aware what secondary activities are, so you can frame your own definition as well. Okay. Now, we'll start from the first subhead, that is manufacturing. जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में होगी. वो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कैसी भी मैन्युफैक्चरिंग हो, हर एक मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बेसिक चीज़ें होती ही होती हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ पावर. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. देन मास प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही यही होता है, मास प्रोडक्शन. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एक लार्ज स्केल पे हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड लेबर. डिविजन ऑफ लेबर होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो एक लेबर है वो जो काम कर रहा है उसमें वो स्पेशलाइजेशन, मतलब उसको वो उसी काम में स्पेशलाइज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री सेटिंग. फैक्ट्री सेटिंग एक बड़ा सा कुछ सेटअप होगा, उसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाती है. ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा हो, वैसे एक छोटा भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री जैसा दिखेगा, प्रोडक्शन हो रहा है सब जगह. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग. देन द कमोडिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड. ऐसा नहीं है कि एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, इस तरह से नहीं होता है. हमेशा जो कमोडिटी बनती है वो एक स्टैंडर्ड तरीके की होती है, वो बदलती नहीं रहती है रोज़ रोज़. ओके, नाउ फर्स्ट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. इससे पहले जो हमने करा वो है मैन्युफैक्चरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम जो कर रहे हैं वो है मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये कई बार आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. Let us start with the first point, specialization of skills, a big method of production. Specialization of skills and method of production. What happens जब क्राफ्ट कोई क्रिएट करता है तो उसके लिए उसको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है. फिर क्राफ्ट जो बनाता है वो ऑर्डर पे सामान बनाता है, बल्क में प्रोड्यूस नहीं करता है. वो बिके नहीं बिके उसको ऐसा नहीं, ऐसे वो नहीं सोचता है, वो अगर बोला है तो बना देगा. ओके, तो इट इज़ मेड टू ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि इसको जो बना रहा है वो एक स्किल्ड लेबर है, एंड स्किल्ड है, लेबर है, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो मांगेगा ही और ज़्यादा ही मांगेगा. सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, बट वॉट हैपन्स अंडर मास प्रोडक्शन, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को बनाया जाता है. इतनी लार्ज क्वांटिटी होती है कि वो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड साइज एंड शेप की होते हैं, हर एक को अलग अलग नहीं बनाया जाता है. ओके, देन जो लेबर होती है वो भी स्पेशलाइजेशन उसको आ जाता है हर एक काम में, और डिविजन ऑफ लेबर भी पॉसिबल हो पाता है. काम को डिवाइड करने से काम ज़्यादा फटाफट कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल हो पाती है. नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन.
Mechanization refers to using gadgets which accomplish tasks. This is mechanization, that using gadgets to accomplish tasks. Okay. Then mechanization is again important because in modern technology there is another concept which is evolving, that is automation. Without the aid of human thinking, machines develop to think. ऑटोमेशन में क्या होता है, ह्यूमंस को बिल्कुल भी अपनी एजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब टाइमर वगैरह सेट कर देंगे एंड देन दे कैन जस्ट एंजॉय. और मशीन्स दे डेवलप टू थिंक, वो अपने हिसाब से वो सारा काम ख़त्म करने के बाद में दे विल गिव यू द रिजल्ट. सो दिस इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ मैकेनाइजेशन, दैट इज़ ऑटोमेशन. ओके, ऑटो मीन्स एवरीथिंग अपने आप हो रही है एंड मेशन इज हो रही है. ओके, सो ऑटोमेशन अपने आप हो रही है. देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. इन टुडेज वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा रहा है फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट, इनएफिशिएंसी, कॉम्बैट पोल्यूशन. ओके, for all these things technological innovations are there, and that's why stress is on R&D, that is research and development. R&D पे काफ़ी ज़्यादा stress लगाया जाता है. Okay, next is organizational structure and stratification. Organizational structure and stratification relates to the way all the factories being organized. Okay, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मशीन, देर आर 5 पॉइंट्स, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम. ठीक है, क्योंकि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, एंड इन दिस केस ऑल्सो that's why this its sub points becomes very important. Okay, so complex machines are used, specialization and division of labor is practiced much effortlessly, then vast capital is used, large organization is set up, and एक executive bureaucracy भी बनाई. Okay, these all things, these are the characteristics, organizational structure की characteristics under modern large scale manufacturing. Okay, and the last one is uneven geographic distribution. अब ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड पूरे वर्ल्ड में बराबर मिलता हो, हर जगह कहीं पे भी खोदो यू विल गेट गोल्ड. ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है. सो दैट्स वाई हर चीज़ डिवाइडेड होती है ना, और उसी की वजह से कंसंट्रेशन जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी होती है. ओके, in this one thing that you need to note is that less than 10% of world's land area have high concentration of modern manufacturing industries. These nations have become centers of political and economic powers. जैसा बोला कि ऐसा तो है नहीं कि हर जगह गोल्ड बिल्कुल बराबर मिलेगा, हर जगह अलग अलग लेवल पे होता है गोल्ड. That's why we say that modern large scale manufacturing की एक characteristics है uneven geographical distribution which determines the location of industries. With this we come to an end to our first video. In the next video we will cover the factors influencing industrial region, industrial location and other important topics. So guys, meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.